Good morning, dear students. In yesterday's lecture, we have explained an important definitions belongs to spectrum. We know that the rays which will emit from sun, they are electromagnetic waves. But now, in today's lecture, we will understand an important example of an element, that elements having electromagnetic waves, and we will understand this with the example of hydrogen. And the question is on the board that hydrogen spectrum is line spectrum. What is the reason behind this? That hydrogen spectrum is line spectrum. Okay, we will explain this with this type of experiment. Okay, so first of all, fill hydrogen gas in electrical discharge tube. This experiment is not given in NCERT textbook. Now we are apart from NCERT textbook because this is very important concept for the explanation of our next theories. Okay, so fill hydrogen gas in electric discharge tube. Now, at low pressure and high voltage, current will pass on electric discharge tube. At a low pressure and high voltage, current will pass on electric discharge tube. The rays of hydrogen, the rays of hydrogen will emit from electric discharge tube. This rays, just see, the rays will emit from this electric discharge tube and will go on prism. Now this type of rays will come on to prism. So this rays will go through the lens and incident to prism. What is the role of lens? Just see. About electromagnetic waves. Electromagnetic waves are non-polarized light. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है पता है आप सबको? नॉन पोलराइज्ड है. जब वो सन में से बाहर निकलते हैं ना तो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, बट मैं उनको लेंस में से पास करता हूं तो वो एक लाइन में हो जाते हैं. उसको कहते हैं पोलराइज्ड लाइट. जो नॉन पोलराइज्ड लाइट है वो कन्वर्ट हो जाता है पोलराइज्ड लाइट में. इनसे एक लाइन में सीधा वो निकलते हैं. वो पोलराइज्ड हाइड्रोजन के रेस सीधे प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रहे हैं और यहां से वो ट्रांसमिट होके आ रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर. देखिए क्या हो रहा है. सो दिस रेस will go through the lens and incident to prism. Then these rays are transmit
photographic plate. And in plate or in screen, we observe different type of colors. So in photographic plate, we observe different type of colors. Which type of colors are there? Visible lights, that means red, yellow, green, ultraviolet rays and infrared rays were observed in screen, fluorescent screen or in photographic plate, and these colors are known as the name of different scientists, like as Lyman series, Balmer series, Paschen series, Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Fund and Humphrey. So these colors are known as the name of the different scientists. इन सभी colors को साइंटिस्ट के नेम से यहाँ पर जाना जा रहा है और वो कलर्स यहाँ पर है. देखिए नेम कौन से दिए हुए हैं, तो लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, पास्टन है, ब्रैकेट है, फुंडे और हम्फ्री है. ये सभी जो साइंटिस्ट के नेम है उसमें कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं उसका टेबल भी हम आगे जाके समझने वाले हैं. But at right now we are discussing about this important topic that hydrogen spectrum is a line spectrum. Why it is line spectrum? Now the reason and the final conclusion is here about this series. So just see this type of rays. These rays are obtained from hydrogen. So this spectrum is known as a line spectrum. So hydrogen spectrum is a line spectrum because this type of line will obtained by hydrogen. The conclusion is only in a one sentence. अभी आपको मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं. देखिए कौन सा कंक्लूजन पता है आपको? कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि जैसे रेडिएशन लाइट में से आ रहे हैं ऐसे ही रेडिएशन एटम में से भी ऑब्जर्व हो सकते हैं. बस इतना ही ऑब्जर्वेशन लाइन स्पेक्ट्रम में हमें देखना है कि दिस टाइप ऑफ लाइट रेडिएशन, electromagnetic radiation which is observed from light, same type of radiation will observed from an atom also. जो बुनसेन नाम के साइंटिस्ट ने अननोन सब्सटेंस की जांच की थी वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से ही की थी. So explain the question that hydrogen spectrum is a line spectrum. The reasons are here. So we have to fill hydrogen gas in electric discharge tube at low pressure and high voltage current will pass on electric discharge tube. The rays of hydrogen will emit from electric discharge tube. These rays will go through from lens and incident to prism. These rays are transmitted to photographic plate in different color will observe. These colors are known as the name of the scientist like as Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Fond and Humphrey. So these rays are obtained from hydrogen atom. That's why hydrogen spectrum is line spectrum. This is the reason, and the conclusion is only one sentence that light radiations, which is electromagnetic waves, and obtain different type of colors. This type of colors will observe from atom also. So this is the final conclusion of the series that hydrogen spectrum is line spectrum. Is it clear to you all? So आज के लिए हम एक ही ये क्वेश्चन
कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो पूरे केमिस्ट्री का इतना बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो पूरा केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं कोई भी टाइप की जल्दबाजी ये आंसर के सॉल्यूशन में, इस चैप्टर के सॉल्यूशन में नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई भी इतनी जल्दी नहीं है ये जल्दी से ये चैप्टर खत्म करने की, क्योंकि बाकी के सभी चैप्टर इससे छोटे हैं। बट इस चैप्टर में बहुत ही फोकस करके चलना है। और ये सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स और एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकेंगे मेरी बात कि मैं कितनी सीरियस बातें कर रहा हूँ। क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज अ बेसिक चैप्टर, और इस चैप्टर में हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करना है, आइदर फॉर नीट और जेईई एग्जामिनेशंस। इज इट क्लियर? तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कीजिए। इसमें हमें कोई भी नेगेटिव लूप फॉल्स हमें नहीं रखना है। आप सबको एररलेस के मैंने एमसीक्यूज भेजे हैं सॉल्यूशन करने के लिए, बट कितने ही एमसीक्यूज ये लाइन स्पेक्ट्रा के निकलने वाला है, जो टॉपिक अभी हमने शुरू कर दिया है। तो अच्छी तरीके से बने रहिए, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, वेल एंड गुड परफॉर्मेंस देते रहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर को समझने में ना आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। गुड बाय फॉर टुडे।